Welcome students, myself Dr. Sunita Arya, Associate Professor in Department of Zoology of the Anand Girls PG College कानपुर। आज मैं आप लोगों के सामने मसल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। ये टॉपिक आपके फिजियोलॉजी कोर्स में आएगा जो कि बीएससी एवं एमएससी दोनों ही क्लासेस के लिए उपयोगी है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनें। जैसा कि हम लोग ने कहा कि मसल्स, व्हाट इज मसल्स? अ बैंड और बंडल ऑफ fibrous tissue in a human or animal body that has the ability to contract or producing or maintaining the position of the part of the body is known as muscle. Because flexing muscles look like mice scurrying beneath the skin, some scientists long age dubbed the muscles from the Latin word mus यानी कि little mouse. There is a wide variety of muscle types because there is a wide variety of function to be served by the muscle, including movement, maintenance of the body posture and orientation, circulation, gastrointestinal tract movement. Now we will talk about distribution of muscles. There are 639 muscles, of which 5 are unpaired and 317 are paired. It shows following distribution: in head 53 muscles, in neck 32 muscles, in back 180 muscles, in breast 54, in belly 15, in legs 124, in arms 98, and in general viscera it has 83. Talk about classification of muscles. According to Prosher 1960, they divided muscles in two forms. First one is phasic muscles. Phasic muscles are rapid in contraction, and the muscles are postural or locomotory with origin and insertion as axo or endoskeleton or on the skin. They are often arranged in antagonistic pairs. Antagonistic pairs means जैसे कि हाथों में मसल्स होती है तो दोनों साइड से है, बैक में है तो दोनों साइड से एक दूसरे के अपोजिशन में पेयर्स में मसल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड नेक्स्ट वन इज टोनिक मसल्स. टोनिक मसल्स मीन्स contract rather slowly and are normally arranged around hollow structure such as gastrointestinal tract or urinogenital tract. One part of the muscle often inserting on another part of the muscle. They may be arranged as paired groups as in the circular or longitudinal. Overview of the muscle tissue. There are 3 types of muscle tissue: skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. Length of skeletal muscles is up to 10 centimeters and diameter about 3 to 60 millimicron, and it has multiple nuclei arranged on the periphery of the cells. General features of the smooth muscles are: it has 1000 cross striation, normally requires nervous stimulation for contraction, generally under voluntary control. Next one is cardiac muscles. It has 100 millimicron of the length and irregular but usually less than 60 millimicron diameter and has 2 to 8 nuclei per cells, and it has general features in cross-striated, cell syncytial and rhythmically under influence of the pacemaker cells. Now we'll come on smooth cells, smooth muscles. Its length is 200 millimicron and approximate diameter is less than 10 millimicron, and it has only 1 nuclei per cell. The general features are:
non-striated, under control of autonomic nervous system, but to varying degrees. Some cells contract sensitively. We again come on striated muscles or skeletal muscles or voluntary muscles. Why we call it skeletal muscles? Because is attached from the bone. That's why we can say it skeletal muscles. And where it's attached, the center of the attachment is called tendon. And voluntary muscles, because we can move it in own desire according to your own need. That's why we call it voluntary muscles. The structure of the voluntary muscles, we can see it in the diagram. बोला बता। हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अंदर जो डॉटेड रेड डॉट हैं ये सब मसल्स फाइबर्स हैं या मस्कुलर सेल्स हैं, और ये मसल्स फाइबर्स चारों तरफ से सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई होती हैं या कवर्ड की जाती हैं। ये अंदर मसल्स फाइबर, ऊपर से इसको बंडल कहते हैं जिसको कि फैसिकुली, और इसके चारों तरफ लेयर होती है, ये कहलाती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के चारों ओर फिर से कवरिंग होती है, और ये कवर है, बहुत सारे पेरीमाइसियम एक बंडल के अंदर होते हैं और वो कवर्ड होती है, इसको कहते हैं ईपीमाइसियम। तो इस तरह से ईपीमाइसियम, देन पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम के अंदर बहुत सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, और ये बोन है और बोन के साथ ही अटैचमेंट है जहां पर मसल्स का। दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेंडन। नाउ striated muscles or skeletal muscles. These muscles form the largest tissue in the body according to 40 to 50 of the total body weight. It contains more than half of the body water and have an extracellular fluid compartment that is about 1.5 times greater than the volume of the muscle arise from the myotomes, thereby also called myotomal muscles. Striated muscles are always in the form of bundle of individual muscle fiber. Connective tissue surrounding the individual muscle fiber is known as endomysium. This one is endomysium, means muscle fiber is surrounding by the endomysium. Bundle of muscle fiber also held together by large strand connective tissue known as perimysium. This one is perimysium, means one fiber bundle is connected by endomysium, then again covered by the perimysium. And perimysium, and at another connective tissue membrane, the epimysium. Structure and organizational level of skeletal muscles. This portion is muscles. जैसा कि भी हम लोगों ने देखा पहले भी कि मसल का एक पोर्शन अगर हम लेते हैं तो ऊपर से ईपीमाइसियम है, और इस ईपीमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम और बहुत सारे पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस एक पोर्शन को और डिटेल में देखें तो ये फैसिकुली, यानी कि एक इसके अंदर जो फैसिकुली है, इस फैसिकुली में बहुत सारे मसल फाइबर है। दिस पोर्शन इज मसल फाइबर एंड दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ द फैसिकुली। और एक मसल फाइबर को अगेन अगर हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं तो इस फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं। सार्कोलीमा सराउंडेड बाय द एंडोमाइसियम, और इसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं।
और इस तरीके से जो बैंड आपको दिखाई दे रही हैं, इस बैंड की वजह से ही इसको स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, पार्ट ऑफ अ मसल फाइबर। दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ मसल फाइबर, और इसमें सार्कोलेमा और सार्कोमेयर सारी चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक मसल को देखें कि मसल में क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट 100 to 1000 ऑफ मसल सेल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू, रैपिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। यानी कि एक जो बंडल है इस मसल्स का, इसमें नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारा चलता है, मसल्स के बीच में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स इसके अंदर पैरेलल इसके चलती रहती हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी नर्व्स की एंडिंग्स और नर्व फाइबर्स भी इसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से, एंड इट covered externally by the epimysium, और fasciculi discrete bundle of muscle cells segregated from the rest of the muscle by connective tissue sheet and surrounded by perimysium, and again surrounded by endomysium. It is a muscle fiber, elongated multinucleated cells, has a banded यानी कि striped appearance. We come again in cardiac muscles. कार्डियक मसल्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कार्डियक मसल्स में 2 to 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कार्डियक मसल्स को हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, इनवॉलेंट्री भी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी स्ट्रक्चर जो है हमारे स्ट्राइप्ड मसल्स से ही मिलते जुलते होते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस में इसकी जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल्स ऑफ द हार्ट, द मायोकार्डियम forms a thick middle layer between the outer layer of the heart cell, that is epicardium, and inner layer is endocardium with blood supplied via coronary circulation. It is composed of individual heart muscle cells and joined together by intercalated disc encased by the collagen fiber and other substances. Cardiac muscles contracts in similar manner to skeletal muscles, although with some important differences. Electrical stimulations in the form of an action potential triggers the release of calcium from the cell's internal calcium stored, the sarcoplasmic reticulum. The rise in the calcium causes the cell's myofilaments to slide past either each other in a process called excitation, contraction, coupling. Disease of the heart muscles are the major importance. These includes conditions caused by the restricted blood supply to the muscles, including angina pectoris and myocardial infarction, and other heart muscular diseases known as cardiomyopathy. On smooth muscles, these muscles are also involuntary muscles, and these are the phasic muscles and found in surrounding the hollow structure. This is specialized function of the contracting muscles, the long periods and hold that force, is why smooth muscles has been adapted to many area of the body. Smooth muscles line many part of the circulatory system, digestive system, and is even responsible for raising the hairs on your arm. Smooth muscles, because of its ability to contract and hold, is used for many functions in many places of the body. Besides those listed above, smooth muscles is also responsible for contracting the iris raising and the small hairs on your arm, contracting the many sphincters in your body, and even moving fluids through organs by applying pressure to them. While smooth muscle does not contract or release as quickly as skeletal or cardiac muscle, it is a much more useful for providing consistent elasticity. We come on voluntary muscles. Voluntary muscles also divided in three parts: metameric, branchiometric,
and integumentary. Metameric is also divided in axial and appendicular. Axial means head, trunk and diaphragm, and appendicular is also divided in two parts, extrinsic and intrinsic. Axial means head, trunk, diaphragm. In head, eyeball and hypoglossus. In trunk, dorsal and ventral surface, means in muscles of the back and muscles of the stomach or front portion, and diaphragm portion. Again, in branchiometric, we know about the cranial nerve group, 5th cranial nerve, 7th cranial nerve group, 9th cranial nerve group and 10th cranial nerve group, and we know about integumentary muscles, means muscles of the skin. Now, detailed structure or microscopic structure of the skeletal muscles. Each skeletal muscle fiber is a long cylindrical cell with multiple oval nuclei arranged just beneath its sarcolemma. The sarcolemma contains large amount of stored glycogen and a unique oxygen binding protein called myoglobin. Myoglobin that is not found in other cell types and is similar to hemoglobin and transport oxygen in blood. Next one is myofibril. When viewed a high magnification, each muscle fiber is seen to contain a large number of rod-like myofibrils. The myofibrils consist two type of smaller structure called myofilaments. We are seeing here one Z line and other Z line, means Z disc to Z disc. The distance between one Z disc to another Z disc is known as sarcomere, means sarcolemma. Thin and our muscles are made from the thin filament and thick filament. Thin filament means actin and thick filament means myosin filament. This one is I band, A band, I band, and between the A band one another line which is H zone is known as M line, and sarcolemma means one Z disc to another Z disc. Distance between the I band to I band is sarcomere, and this is the thick filament. Thick filament, thin filament means actin, and this one the thick filament means myosin, means elastin, and the detailed structure of I band means thin filament, H zone thick filament, and M line thick filament linked by the accessory protein, and outer edge of A band means thick and thin filament overlap. And sarcomeres means I band, distance between I band to I band with Z disc is also overlapping, and it helps in contraction of the Now we can talk about the thin and thick filament. Thin filament means actin. The thin myofilaments mainly consist actin and composed by two strands of the actin arranged in a right-handed helix. Each actin filament is in turn composed of many actin monomers jointed together. Means this one is actin and this one is monomers, and after attaching it becomes polymers and makes a right-handed helix. And next one is myosin. Myosin means each thick filament is composed of several hundred myosin molecules packed together in a specific arrangement. It has golf club like shape with short compact head and a long soft. This one is tropomyosin.
tropomyosin also attached with actin and myosin. Uh, Tropomyosin, the protein constitute about 3 to 8% of the total protein consists of the muscles filament. Molecular weight of the tropomyosin is 70,000 and length is 4,000 angstrom and diameter is 20 angstrom. There are two forms of tropomyosin, tropomyosin A and tropomyosin B. ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में बाइंड करने में हेल्प करता है ट्रोपोमायोसिन. अगेन इन ट्रोपोनिन, इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 3 subunits. The calcium binding unit means troponin A or troponin C, the inhibitory unit and the tropomyosin binding unit. The calcium binding unit can complex with 2 calcium ion and it requires 2 specific site for its binding with the thin filament, one in the actin strand and another in the tropomyosin strand. Means this one is tropomyosin complex and it has 2 sides, means one can bind with the actin and one can bind with the another side. Another is actinin. This is a protein having a molecular weight of about 1,60,000. It has present in Z line. It can strongly react with actin and can form cross-linking with F-actin filament, and calcium ion is also essential for the attachment of the troponin and tropomyosin with the monomers of the actin filaments. Now, level of organization in skeletal muscles. हम लोग ये देख रहे हैं कि होल मसल्स को जब हम अलग करते हैं तो क्या मिलता है? मसल्स फाइबर्स को और जब थिन करते हैं तो उसमें मायोफाइब्रिल्स को भी जब हम और थिन या हाई मैग्निफिकेशन में देखते हैं, देन थिक एंड थिक फिलामेंट. थिन एंड थिक फिलामेंट को भी जब हम हाई मैग्निफिकेशन करते हैं तो उसमें एक्टिन एंड मायोसिन, दीज आर द प्रोटीन्स. और तो हम ये देखते हैं कि होल मसल्स एक ऑर्गन है, मसल फाइबर्स इज अ सेल, मायोफाइब्रल इज अ स्पेशलाइज्ड इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, थिन एंड थिक फिलामेंट is a cytoskeletal elements and myosin and actin are a. अब हम आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. जैसा कि पहले भी बताया था कि मसल्स के अंदर नर्व इनर्वेटेड होती हैं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमें कब अपने हाथ को मोड़ना है, कब अपने हाथ को खोलना है, ये हमारे स्केलेटल या हमारी वॉलंटरी मसल्स के साथ काम होता है. और ये टोटली हमारे ब्रेन से भी अटैच है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तभी जैसे कि हमें अपने हाथों को मोड़ने का मन हो रहा है, हम अपने हाथों को तभी मोड़ सकते हैं जब ब्रेन से हमारे पास आदेश आता है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी, मोटर्स एंड मिक्स. सेंसरी जिससे कि ब्रेन से मैसेज आता है नर्व्स तक, और मोटर यानी कि जो मैसेज ले जाते हैं ब्रेन तक, और मिक्स यानी कि बहुत सारी नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों पर मिक्स वर्क करते हैं. अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. द नर्व सेल्स हुज एक्सॉन इनर्वेट स्केलेटल मसल फाइबर आर नोन एज मोटर न्यूरॉन and their cell bodies are located in the brain stem और spinal cord. ऐसा क्यों होता है? स्पाइनल कॉर्ड में जब देखा है, जैसे कि हम लोगों ने कभी एग्जांपल लें कि कभी हाथों में सुई कभी चुभ जाए या कोई भी नुकीली, तो हाथ एकदम से वापस लेते हैं, जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं. और ये कैसे होता है कि सुई के चुभते ही मैसेज इमीडिएट पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन स्टेम तक, और वहां से मैसेज आता है कि अपने हाथों को हटाना है. तो नर्व के साथ साथ हमारी मसल्स भी वर्क करती हैं और हाथों को हटा लिया जाता है. तो ये प्रूफ करता है कि हमारी मसल्स और नर्व का कोऑर्डिनेशन होता है और होना बहुत आवश्यक है. द सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर टू अ मसल्स इज कॉल्ड इनर्वेशन, यानी कि नर्व जो है मसल्स में है तो उसको हम लोग इनर्वेशन
कहते हैं द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जंक्शन बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द प्लेट इन्वेजिनेट इन द मसल फाइबर बाय द लाई entirely outside the muscle fiber membrane. End of the nerve is called sole feet and invagination of the membrane called synaptic cleft. ये बीच में जो ग्रुप्स देख रहे हैं, this is called as synaptic cleft. ये पूरा synaptic cleft है and this one is sole feet and space between the sole feet and fiber membrane is called the synaptic cleft. Nerve and muscle cells contain much potassium but little sodium. और इसके बीच में जो हमारे इस आप ये देख रहे हैं कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और इसको रिसीव करते हैं मसल्स की जो बॉडी होती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं और ये रिसेप्टर्स इसको लीजेंड गेट होता है इसके चैनल्स का, और इसको रिसीव करके और आगे पोस्ट करते हैं, आगे की ओर भेजते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड नर्व इम्पल्सेस की तरफ, और इससे जो है वो पूरा वर्क होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो भी नर्व का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन वो यहाँ से डिसाइड। अब हम लोग देखेंगे कि कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसको हम इस वीडियो के द्वारा देखते हैं। स्केलेटल मसल्स, दिस इज द स्केलेटल मसल्स एंड दिस वन इज अ फाइबर। अब ये फाइबर, ये आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स मसल्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर फ्रेम हो रहा है। दिस एरिया इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज सोल फीट और क्लब, और ये मसल्स के साथ नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो है वो मिल रही हैं। दिस वन इज मायोफाइब्रिल्स, दिस वन इज सार्कोमियर्स यानी कि वन आई लाइन यानी कि जेड टू जेड आई बैंड के बीच में जो जेड लाइन होती है, यहाँ से ये एक सार्कोमियर है। ये थिन फिलामेंट्स हैं और एक ये थिक फिलामेंट्स है। इस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैसे काम कर रहा है, आप ये देखिए कि ये मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट एंड एक्टिन के जो बॉल्स होते हैं, यानी कि ये मोनोमेर्स में होते हैं, जो कि पॉलोमेर्स और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के साथ मिल करके ये बनाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है या होना होता है तो ये आपस में ये लाइन पास में आती है, देखिए, और ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये जो बॉल बताया था कि मायोसिन में किस तरीके से ये क्लेफ्ट जो एक्टिन का गोला है इसके साथ ये मिल करके क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ये क्रॉस ब्रिज है और ये बहुत सारे मायोसिन के फाइबर्स हैं और इस पर ये मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। जैसे कि हम ये कहें कि एक डोर को बंद करने के लिए एक स्टॉपर होता है, उसी तरीके से फंक्शन करते हैं और इस ग्रुप्स में आकर के फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एटीपी एनर्जी, इसका भी बहुत रोल होता है, कैल्शियम आयन का रोल होता है, जो कि फिजियोलॉजी और इसकी बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये एटीपी यानी कि यूज हो गई, वो एडीपी में कन्वर्ट हो गई और इस तरीके से इसके साथ ये जो येलो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये फिक्स होते जाते हैं और मसल्स आगे की ओर मूव करती रहती है। इसी को हम एक फॉस्फेट मूलक देखिए आपने कि अभी रिलीज हुआ, दूसरा एटीपी आया, यानी कि एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज होती है। तो आप ये देख रही है कि कॉन्टिन्यूएशन में एनर्जी एटीपी के रूप में आती जा रही है और ये फॉस्फेट मूलक रिलीज हो रहा है और वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम आयन आ रहा है, आप देखिए कैल्शियम, साथ में अभी मैंने ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के बारे में बात की थी। ये लाइन जो जा रही है ये ट्रोपोमायोसिन की है, ये भी एक प्रोटीन है एंड ट्रोपोनिन ऑल्सो अ प्रोटीन। तो इस तरह से ये कैल्शियम आयन इसके साथ आकर के मिलता है और मिलने के साथ ये बाइंड करते हैं। तो जो मोनोमेर है ये पॉलीमर में बन करके एक बाइंडिंग साइट बना लेते हैं। अब ये जो बाइंडिंग साइट बन रही हैं, इन बाइंडिंग साइट के साथ साथ जो है ये मूवमेंट
होता जाता है और इस तरह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो नर्व्स का मूवमेंट है, जहाँ पर जैसे मूव करना है, और यहाँ से जो मैसेज है ये मैसेज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मसल्स में आ जाते हैं और मसल्स उसी के अकॉर्डिंग मूव करने का काम शुरू कर देती है और मसल्स मूव करती है। आप ये देखिए कि किस तरह से हमारे मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट के बीच में, और ये कॉन्ट्रैक्शन एक लेवल तक होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से पास में मिलते हैं तो एक लेवल तक ही वो मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो मसल्स रप्चर हो जाते हैं और वहीं पर मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, मसल्स फट जाती हैं। तो बच्चों, ये हमने आप लोगों के लिए एक एनिमेशन के द्वारा दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप लोगों को उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।